ऐसा करम ना कीजे आब घटे तन छीजे ऐसा करम मां कीजे आब घटे तन छीजे छंदरे गोरख आए अगम नगम दियाए ला जागम छंदरे गोरख आए अगम नगम दियाए ला कौन नींद में सोए गुरु जी लाज रहे हम चेला ऐसा करम कीजे साधो आब घटे तन छीजे ऐसा करम ना कीजे साधो आब घटे तन छीजे Natha, the word means Lord or Protector or Refuge. Mahadeva is the Adinath or the original and absolute Lord of the sect. The Nath Yogis want to remain in yoga with Parashiva, the Supreme One without a second, who supports the entire plethora of existence. The Nath Sampradaya is fragmented into very many sects and subsects, yet all accept both Matsyendranath and Gorakhnath as the undisputed founders and Adi Gurus. In the world of academia and research, much speculation exists in the exact identity of the two main yogis who founded and solidified this tradition, as most of the Nath Sampradaya's teachings are occult in nature and their literature written in Marathi. Gorakhnath founded the Kanfatta school of Nath Yoga, a pan-Indian movement which had a great impact on the whole subcontinent and which influenced other movements including the Sants and the Sikhs. Matsyendranath is associated not only with the decidedly Tantric Yogini Kola school of the Naths, but is also linked in Nepal with the Buddhist Vajrayana tradition and completely identified with Avalokiteshvara. A tradition says that Niranjan Nirakar, the formless creator, created Gorakhnath from the sweat of his breast. Whence is also called Ghornath, from Ghor or filth. The Supreme then bade him create the universe, whereupon a creeping plant sprang from his navel and a lotus blossomed on it. From this flower sprang Vishnu, Brahma, Shiva and Shakti, and last our earth, symbolized by a woman, who dived deep beneath the waters before earth or sky, air or fire had been created. As earth was indispensable to the complete manifestation of the universe, the Supreme sent Vishnu down to the lower regions beneath the waters to bring earth to the surface. When he reached the Patalaloka, Vishnu saw Shakti with a dhuni in front of her, while light rayed from her body. A voice asked, "Who had come?" And Vishnu replied,
that his errand was to bring up earth by the Supreme's command. The Shakti answered that he could do so, provided he first wed her. But Vishnu urged that intercourse with her was impossible, since even at a distance of 12 koshas, he found her effulgence insupportable. So he returned unsuccessful. Brahma likewise failed. So at last Shiva was sent. To his reply that Shiva had come, the voice said, "There have been crores of Shivas. Which Shiva art thou?" Shiva answered that he was the Lord of Kailash, and he agreed to espouse Shakti when earth and sky had come into being. Shakti then gave forth the 4 Vedas and bestowed 2 handfuls of ashes with some smoke from her dhuni upon Shiva, who carried them up. The smoke, when sent upwards, became the sky, and the ashes, when strewn into the waters, formed land. Hence the Nath yogis worship only Gorakhnath and Shiva by a process which reminds us of the myth of Hephaestus in Athena. Gorakhnath became, by a fish, the father of Matsyendranath, who forthwith went into the wastes to worship. When Gorakhnath was reproached with his incontinence, he felt that he must seek out a guru of his own. But finding none better than himself, he bethought him that his own son was fitted for the office and exclaimed, "The husband's embraces cause sons to be born. Thus saith the ascetic Gorakh." He then sought out Matsyendranath, who would have fallen at his feet, but Gorakh addressed him as his own guru. This is how Matsyendranath became Gorakh's guru as well as his son. नाथ परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और अपने नाथ परंपरा में जो हूँ सो मैं पीर हूँ। और ये नाथ परंपरा की शुरुआत सृष्टि की शुरुआत के साथ साथ ही हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 शास्त्र का वर्णन हुआ है, आगम शास्त्र और निगम शास्त्र का। आगम शास्त्र में शिव बक्ता हैं, पार्वती श्रोता है, और निगम शास्त्र में पार्वती बक्ता हैं और शिव श्रोता है। ये दोनों शास्त्र का जहाँ सामंजस्य होता है, जहाँ प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य हुआ है, उसी जगह से जो है सो ये नाथ परंपरा की शुरुआत हुई है। नाथ परंपरा का बेस जो है वो आधार जो है वो तंत्र शास्त्र के ऊपर आधारित है। आज दुनिया के जहाँ से भी जिस क्षेत्र के भी लोग रिसर्च करते हैं, 2 ही चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, साउंड एंड लाइट के ऊपर। साउंड की चरम परिणति हमारा मंत्र योग है और लाइट की चरम परिणति हमारा ध्यान योग है। और नाथ परंपरा का भी रिसर्च जो है शुरू से ही साउंड एंड लाइट के ऊपर होता हुआ आ रहा है। और दुनिया जिस बात को, जिस तत्व को, जिस मर्म को, जिस रहस्य को दुनिया के हर एक धर्म के, हर एक मजहब के लोग स्वीकार करते हैं। इस नाथ परंपरा में एक परंपरा चली शक्तिपात की परंपरा। जब कश्मीर में हमारा धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा था, हमारे धर्म जो है विलुप्तावस्था में पहुंच चुकी थी, उस समय वहाँ एक बहुत बड़े आचार्य पैदा हुए, उनका नाम था आचार्य लल। Some great soul, Shambhu Bhattaraka, has said, this Yogaraja commentator of this Abhinavagupta's Paramarth Saram, he refers this shloka of Shambhu Bhattaraka. He was great soul. Eko bhava sarva bhava svabhava sarve bhava ek bhava svabhava eko bhava tattato yen dreshta sarve bhava tattadasten dreshta. Eko bhava, one being that is Shiva, Lord Shiva, Parabhairava, has become Sarvabhava Svabhava. He has become many right from that insect to Shantakala. He has become so many. Sarve bhava ek bhava svabhava, and
all these are actually ekabhava svabhava. Only this is the drama of one Parabhairava, bas. It is only ekabhava. All are one. One are many. One have become many. Eko bhava tadado yehnadre. And that fortunate one who has realized what is eko bhava, one being. One being who has realized by the Tivra Shaktipath of Parabhairava. Sarve bhavas tattvatastena drishta. He has realized all beings. So all beings are equal to one being. One being is equal to all beings. There is no difference between all beings and one being. Right? Swami Lakshmanju Raina, also known as Lal Sahib, was a realized saint and revived Kashmir Shaivism from extinction. As their website eloquently puts it, Kashmir Shaivism is not a religion. It is a philosophy open to those who have the desire to understand it. Hence there are no restrictions of caste, creed and color. Kashmir Shaivism, called the Trika philosophy, is a threefold science which has for its foundation the three energies of Mahadeva, known as Para or supreme, Parapara or intermediate, and Apara or inferior. We humans reside in the Apara, the objective inferior energy spectrum of Shiva. Kashmir Shaivism imparts to us the path of transformation which carries us from this inferior state to the Parapara, which is the cognitive state, to the final immersion in the Para or the supreme state. This metamorphosis results in the liberation or moksha from the tragedies and comedies of samsara. Kashmir Shaivism essentially employs three methods for this final attainment of supreme beatitude, which are meted out to the sadhak according to her spiritual abilities and development. This school of thought is based upon tantras revealed by the Lord himself. The tantras are divided into three classes: monistic or Bhairav Tantra, monodualistic like the Rudra Tantras, and dualistic like the Shiva Tantras. The scriptures of Kashmir Shaivism were related by Lord Shiva himself in the form of Satchidanandanatha, through his 5 mouths symbolizing his 5 great energies of Chit, Ananda, Ichha, Jnana and Kriya. The 5 mouths are individually referred to as Ishana, Tatpurusha, Aghora, Vamadeva and Sadyojata. लल ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जिस परंपरा का नाम दिया गया शक्तिपात। शक्तिपात शक्ति का गिरना नहीं, बल्कि हमारी जो अंतर मन की जो चेतन तत्व है, हमारा जो मन का जो चेतन है, उस चेतन के सामने अपने आप को झुका देना या अपने आप को जो है तोड़ देना, उसके सामने अपने आप को समर्पण कर देना, ये हमारा जो है निर्विकल्पक समाधि है, जिसकी खोज आज तक सारे लोग कर रहे हैं। उसी में एक परंपरा जो शक्तिपात की जो परंपरा चली, वो शक्तिपात की परंपरा में जो साधक के अंदर जो सोई हुई अंतर चेतना है, सोई हुई जो शक्ति है, उस शक्ति को जो है गुरु लोग अपने संकल्प शक्ति से उस शक्ति को जागृत कर देते हैं। दुनिया में हर एक जगह लोग पूछते हैं भगवान क्या है, भगवान क्या है। तर्क तो लोग देते हैं, तर्क से साबित भी कर देते हैं और तर्क से साबित नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन शक्तिपात परंपरा में जो है प्रत्यक्षगत, वहाँ तर्क से नहीं, क्रिया योग से जो है हम दिखा देते हैं ये परमात्मा की सत्ता या परमात्मा की शक्ति जो है वो क्या है। ये ब्रह्मांड का जो है ये छोटा रूप हमारा शरीर है और शरीर का हमारा सबसे बड़ा रूप हमारा ये ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो परमात्मा की सत्ता है और वो जो हमारा परमात्मा की सत्ता जो सोई हुई सत्ता है, वो शक्तिपात के परंपरा से या शक्तिपात की दीक्षा से या शक्तिपात के द्वारा वो सोई हुई सत्ता को हम नाथ परंपरा के लोग जागृत कर देते हैं। और संसार वाले को या जो वहाँ पर जो तर्क करने के लिए लोग आते हैं या जिज्ञासा लेकर के आते हैं जी आखिर है क्या या परमात्मा क्या, तो उसको हम दिखा देते हैं या उसको जो है एहसास करा देते हैं। यही जो है सो ये शक्तिपात है। और शक्तिपात में 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ के बदौलत जो है सो साधक
स्वविकल्पक समाधि में जाता है और उसके बाद जो है सो परमात्मा की कृपा होती है, जिसके बाद निर्विकल्पक समाधि में चला जाता है। और निर्विकल्पक समाधि के बाद जो है जो उसकी कृपा बनी रहती है और इधर पुरुषार्थ उसका काम करता है। पुरुषार्थ और कृपा दोनों मिलकर के साधक को मोक्ष तक ले जाता है। यही जो है हमारे शक्तिपात परंपरा का जो है वो चरम लक्ष्य है। ओके, इसके लिए तंत्र शास्त्र में दो विधा चली, एक वाम मार्ग की विधा चली, दूसरा जो है वो दक्षिण मार्ग की विधा चली। वाम मार्ग, वाम का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा और दक्षिण का अर्थ होता है सीधा स्ट्रेट लाइन। तो जो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जो चलने वाले व्यक्ति होंगे उसकी मन स्थिति या उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो वाम मार्ग जो है वो भी आगम शास्त्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है पार्वती वक्ता हैं और शिव जो है वहाँ पर श्रोता है। हमारा जितना भी दुर्गा सप्तशती को अगर आप लेते हो, या तो आप दुर्गा सप्तशती को ले लो या डामर तंत्र को ले लो, महानिर्वाण तंत्र को ले लो, किसी भी तंत्र को ले लो, वहाँ पर बेसिकली जो है हर एक जगह वाम मार्ग के बारे में ही बताया गया है। वाम मार्ग की एक शाखा है अघोर मार्ग। घोर नाम है शरीर का, नए समास करते हैं ना घोर अघोर। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। हमारे मम्मी और डैडी वेस्ट बंगाल सरकार में IAS ऑफिसर थे। 7 साल का 7.5 साल का था, उसमें हमारे मम्मी और डैडी हमारे गुरुजी के यहाँ मेरे को डोनेट कर दिए। और हमारे गुरुजी डॉक्टर रामनाथ अघोरी नेपाल नरेश के राजगुरु थे। मेरा लालन पालन शिक्षा दीक्षा रॉयल पैलेस नेपाल में हुई। ग्रेजुएशन में BHU वाराणसी से किया, पोस्ट ग्रेजुएट MPhil और PhD ये मैं JNU नई दिल्ली से किया। ये सन 74 की बात है। और अभी देख रहे हो मेरी उम्र जो है तकरीबन 60 साल हो रही है, लेकिन शक्तिपात की परंपरा के बदौलत या शक्तिपात की साधना के बदौलत मैं अभी भी 34-35 साल से ज़्यादा का नहीं लग रहा हूँ। Baba Ramnath Aghori lived for 217 years in his physical body. Born in the royal family of Pahur near Tarapet in West Bengal, he was always interested in spirituality. Baba Ramnath took the path of sannyas at the mere age of 16, when Baba Gambhir Nath initiated him under an ancient peepal tree. He became incorporated in the Kanfatta segment of the Gorakhnathis. Very soon, he became indispensable to the Nath Sampradaya. Many yogis of the Sampradaya were amazed to see the young Ramnath's courageous approach to sadhana. He was considered the star pupil of the Kanfattas. Wandering on foot for the next 50-odd years, without any ties or earthly possessions, he travelled to all the main peeths and places of pilgrimage, continuing his mantra yoga and spiritual penances. Travelling on foot, he crossed the borders of India into Tibet, then China. He went eastwards to Vladivostok in Siberia and began returning back through China, Central Asia, Persia, Iraq. He even went to Arabia. He returned to India via Persia, where he performed penances at a spot of pilgrimage of the deity Hinglaj Devi, an emanation of Shakti, held in great reverence by the Nath tradition, located in the arid Makran coast of modern Pakistan. He reached the pinnacle of his yogic journey at Girnar, and henceforth was addressed as Yogi Raj. From there he left for Ajmer Dwarka, where he learned Islamic esoteric practices from the Pir Babas in the Mazar. Then after the completion of some of the most complex practices, he left for Kamakha in Assam. He resided for a long time at the Bhutnath cremation ground and then went on to the Pashupatinath cremation ground in Nepal, where he became a Siddha of Mantra Gyan and Vetal Gyan, two very occult practices practically lost to mankind today. And ultimately he became an Aghora
initiating numerous sadhaks into this very esoteric sadhana. He became known as Aghoreshwar. অঘরি বাবার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বীরভূম জেলার বাইতরা গ্রামে। পরের বছর সালটা ছিল 1976, উনি পিন্ডা গ্রামে আসেন, আমি সেই বছর ওনার কাছে দীক্ষা নিই। তারপরে 1979 সাল পর্যন্ত তিনি পিন্ডা গ্রামে এসেছেন দীর্ঘ 4-5 বার। এই 4-5 বার 2-3 দিন করে আমাদের গ্রামে থেকেছেন এবং এই সময় আমি তার খুব ক্লজ সান্নিধ্যে আসি, খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি এবং তার বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী হই আমি। He was the head of the Gorakhnath temple for a century when he travelled to Tibet. He discovered the true teachings of the Nath Sampradaya, which lay sedimented under the false propaganda of the Gorakhnathis. On the meandering snowy slopes of the Himalayas, he met Tibbeti Nath Baba or Shaktipath, who took him to Bhaktashar in Birbhum in West Bengal, where he had a life-altering experience meeting Baba Bhumshankar Aghori, who was said to be the last in the lineage of Swayambhu or Padmasambhava, who took Buddhism to Tibet. In a book by Pramod Kumar Chattopadhyay called Tantrabilashir Sadhu Sango, we get a glimpse of this mysterious Baba Bhumshankar Aghori, who is referred to as Aghoribaba by the writer. We see the high level of realization that had dawned on this Aghoribaba. He was himself Parashiv, and let me read to you an excerpt from the book about a deep personal revelation from the author about this Mahabhairav. আমি এই সুযোগেই তাহার চক্ষে এক অপরূপ বস্তু দেখিতে পাইলাম, যাহা জীবনে কখনো ভুলিব না। কি বিশালয়ত চক্ষু তাহার! এতদিন সঙ্গ করিয়াছি, তাহার নয়নের এই রূপ বিশাল মূর্তি কখনো দেখি নাই। জবা ফুলের মতো সত্য সত্যই অতটা ঘোর লাল, মধ্যে বড় বড় 2টি ক্ষীণ স্বচ্ছ নীলাভ তারকা, তার মধ্যে এক ফোঁটা গাঢ় নীল বর্ণের মণি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তাহার মধ্যেও যেন স্বচ্ছ তারকা ভেদ করিয়া লালের আভা প্রবেশ করিয়াছে। তারপর সেই মণির ঠিক উপরেই অতীব উজ্জ্বল দিবাকর জ্যোতির সূক্ষ্ম একটি বিন্দু দেখা যাইতেছে। তাহাতে সেই চক্ষুর মধ্যে এক অমানসিক তেজ উৎপন্ন করিয়াছে। উহা স্বচ্ছ, উহার উপর দৃষ্টি রাখা যায় না। সে মূর্তি দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, আমায় যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভয় নয়, কারণ তাহাতে ক্রোধ হিংসাদি কোনো প্রকার উগ্রভাবের ছায়াও ছিল না, ছিল কেবল তাহার শক্তির অসীম আকর্ষণ। দৃষ্টিপাতে একজনকে একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লইবার ধ্রুব শক্তি, অপূর্ব ভাবোদ্দীপক, পূর্ণ শক্তির আলোক উদ্ভাসিত সেই দিব্য চক্ষু 2টি। তাহার রূপ এখনো আমার স্মৃতির মধ্যে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। Baba Ramnath began to learn the esoteric sadhana of Aghora under Baba Bhumshankar Aghori of Bhaktashar. After completion, he left for Samya in Tibet, where he taught and lived for a long time. Baba Ramnath Aghori returned to Nepal, became the Rajguru, and brought back the original old texts and discourses, stripping the Gorakhnathis bare of their hypocritical teachings, forced the abdication of their figurehead, and restored the ancient order. Baba Ramnath became King Birendra's guru after granting him an extraordinary vision of Shiva and Kali on his open palms. He initiated many reforms and brought about much change in Nepal and in the spiritual and physical life of a people. Things changed again, and he left for Calcutta after being troubled by King Birendra's manipulations of spiritual powers and siddhis that would finally cause him great harm. King Birendra displayed rampant irreverence to his guru, who in essence is more than one's own father.
This had made Ramnath Baba comment that due to the karmic flow of events, King Birendra's head will roll in the hands of his own son and crown Prince Dipendra, no matter how he may desire otherwise. The vile destruction of the Nepal royal family at the hands of Prince Dipendra clearly displays the irrevocable karmic drift. Baba Ramnath left his corporeal body in 1980 on the 6th of Jan, and his sepulchre is in Balurghat, North Bengal. On the day of his departure, his disciple recollects that it felt as if Mahabhairav, or Lord Shiva, was returning to Mount Kailash, accompanied by the sounds of sacred instruments. Nandi, Bhingi, and other spirits, beloved of the Lord, had come to receive him for this divine journey. Certain individuals perform spiritual penances in yogic practices for their own moksha. But Mahayogis like Baba Ramnath care not for their own siddhis, but for the spiritual upliftment of their country, people, and race, nay, of the whole of humanity. Although India had gained independence, the fetters of slavery threatened to stifle the very prana of the people. They were demoralized, emasculated, and dispirited. Baba Ramnath yearned to set these troubled souls free from their life of bondage. He did so by initiating numerous sadhaks to a spiritual understanding of reality. Not to mention, he also helped out in the troubled times by delivering important messages to the prisoners in jail. No one saw him come or go. He may have used his siddhis of invisibility to fool the English gods. Today, the mere mention of Tantra seems to evoke a sense of loathing, disgust, and fear, stemming from sheer ignorance and rampant exploitation by charlatans who emphasize on sexual intercourse as the fundamental basis of this sacred art. But Mahabhairavs like Ramnath Baba are the individuals who have kept the true tradition of the ancient Shaivik Tantra alive. He was a high-level adept, established in constant union or yoga with the quantum field of the mother matrix, and possessed immense powers of telepathy, clairvoyance, energy transference, healing, thought suggestion, just to name a few in the lower levels. And of his higher powers, our intellect can barely grope in darkness, as they are completely beyond our comprehension. Although part of the Nath Sampradaya, he was like a rose, who spread its fragrance amongst all without any discrimination or restriction. He loved all with their flaws and perfections, like a mother, scolding, cajoling, and loving, even to the least deserving. He was consciously engaged to help humanity to the very last breath. Truly, he was our Baba Guru.